लिपि लिपि भारतीय लिपि, लिपि लिपि भारतीय लिपि, लिपि लिपि भारतीय लिपि। ये तो बता दो कहाँ से निकली लिपि लिपि भारतीय लिपि। हमसे रूबरू तो हो लो, इतिहास के पन्ने खोलो, संस्कृति दर्शाने वाली, ज्ञान हम तक पहुँचाने वाली लिपि लिपि भारतीय लिपि। ये तो बता दो कहाँ से निकली लिपि लिपि भारतीय लिपि। तुम हमारी शान हो, हिंद की पहचान हो, विद्या का भंडार हो, विश्व की तुम शान हो। Like ancient Greece, ancient India did not usually have political unity, but was seen as a geographical and cultural unit even by foreigners. The Indic civilization has immense diversity within itself, but has been held together, as pointed out by Professor Diana Eck of Harvard University, by a sense of sacred geography, of pilgrims traversing this land, sharing Vedic beliefs with all the cultural diversities of rituals, cuisine, and attire. Over a passage of time, various Indic creeds like Buddhism and Jainism emerged, other than the Abrahamic faiths too, finding a presence in India, and in many cases having developed localized versions in the syncretic fiber of this land. The beautiful valley of Kashmir too has a history of Vedic beliefs and the usage of the ancient Indian language Sanskrit. Kashmir constituted a part of several pan-Indian empires, like under the Mauryas, Kushans, Guptas, Khiljis, and Mughals. Under the British Raj, Jammu and Kashmir was one of the 562 princely states that came under the Chamber of Princes in New Delhi under the British Viceroy, unlike some technically sovereign kingdoms like Nepal, Bhutan, and Kalat. By the 1940s, when there was talk of India being partitioned on religious lines, the National Conference, the party that had led the Kashmiri people's resistance against the monarchy in their princely state, in conjunction with the anti-colonial freedom struggle led by Mahatma Gandhi, made its choice of Kashmir joining India. And many Kashmiris, Muslim, Hindu and Sikh alike, resisted the Pakistani onslaught on their region in 1947-48. This continued even after the state's accession to India. As a temporary measure, a ceasefire was entered into, and the United Nations mandated the region under Pakistani occupation to be vacated by the Pakistani forces before any further steps could be taken. But the region has remained under occupation ever since. And since the 1980s, elements in Pakistan have fanned radical Islam in the valley, which tragically led to the exodus of most of the Hindu minority of the Kashmir Valley from their homeland. This is a series about ancient Indian scripts or writing pattern. देखिए, हमारे देश में लिपियों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है और पांडुलिपियों के माध्यम से अगर हम देखें तो संभवतः पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ भारत में हैं और एक मोटा अंदाज ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो हमारे ज्ञात क्षेत्रों में हैं, नोन रिसोर्सेस हैं। अगर हम पांडुलिपियों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर हम पांडुलिपियों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे उन सभी पूर्वजों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान का इतना बड़ा भंडार उपलब्ध कराया है। I think it is really important for us to understand where we come from, our pasts, what defines us, what defines our culture and community. And once we have a clear understanding of that, have an understanding of where we are from, we'd be able to look forward, we'd be able to look towards just about anything that's within our reach. In this effect, I think script, language, literature
everything becomes really integral for our study. Just like how we have contemporary literary pieces that we go back to, I think contemporary literature of the past is just as important, because the past is what defines us and it lays our path out for the future. In this episode, we shall deal with a script in which not only a wealth of ancient wisdom has been recorded, but which also survives for religious and ritualistic purposes of Kashmiri Hindus. It is named after Sharada, the goddess of learning and arts in the Hindu pantheon, held in great reverence by Kashmiri Hindus, and to whom a shrine is dedicated, which now falls in Pakistan-occupied Kashmir. I personally knew some members of our community who could not read Sanskrit through Devanagari, but they were very comfortable reading Sanskrit through Sharada script. Sharada is a kinetic term which is evident from its significance related with different aspects of the culture of Kashmir since ancient times. It is very significant to note that Sharada is revered till date as Devi by the Kashmiri community for invoking knowledge and wisdom. There is a long discussion available in the Shaiva and Shakta tantras which were prevalent in Kashmir. Vowels and consonants are revered as Shiva and Shakti. In an Akshara, there are both Shiva and Shakti present. The groups of consonants are revered as Devis or goddesses. Therefore, it is mandatory to invoke or to meditate upon the matrikas for achieving higher state of knowledge and wisdom. The temple had an adjoining major center of learning in diverse fields, and the Chinese Buddhist monk Xuanzang visited it in the 7th century CE and stayed in this center of learning as a pupil for some time. There existed a renowned Sharada shrine in Kashmir in the village Sharadi. This was in ancient Kashmir. This part falls in POK now. Acharya Shankara, the propounder of Advaita Vedanta theory, is said to have visited this shrine and received the blessings of goddess Sharada. It is said that when he returned from here, he consecrated a temple to Sharada Devi in Sringeri, which still exists there. Another great scholar who visited from south of India during 10th, 11th century, this great shrine, was Ramanujacharya, the propounder of Vishishtadvaita theory of Vedanta. He writes in his commentary, in the introduction of his commentary on Vedanta Sutras, that when he wrote his commentary, he took it to the scholars of Kashmir for receiving their comments on his commentary. And it is said that he did not receive only the great appreciation for his work, but this commentary was also given the title as Sri Bhashya. This was the high standard of learning during those days. In classical literature, we find references of Kashmir known as Kashmir Mandala, which means that the presiding deity of Kashmir is goddess Sharada. Namaste Sharada Devi Kashmir Puravasini. That means, I bow to you, Sharada Devi, who lives in Kashmir Pura. Tamaham prarthaye nityam vidyadanam cha dehi me. I invoke you every day so that you bestow knowledge and wisdom to me. Kashmir has been known as one of the Siddha Pithas. Therefore, Kashmir is also known as Sharada Peeth, which means the seat of learning and the seat of Sharada. It may be interesting to note here that in our country, there are some places where their
prevails a practice during the Upanayana where a boy is directed to take few steps towards the direction of Kashmir for invoking the blessings of the goddess of learning, that is Sharada. Like most Indian scripts, the Sharada script too traces its genealogy to the Brahmi script. The Brahmi script, dated to the 3rd century BCE or earlier, underwent tremendous modifications to the extent that by the 5th century CE, no one could read the Mauryan inscriptions in the older version of the Brahmi script. The form of the Brahmi script used in the Gupta period by the 4th to the 5th century CE acquired a slant character in certain regions and gave rise to yet another script called the Kutila script. Inscriptions and manuscripts in the Kutila script have been found in Bareilly in eastern Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. It is from the Kutila script that the Nagari and Sharda scripts emerged, which show the influence of the quadrangular version of the Brahmi script. Manuscripts in a precursor to the Sharda script were found in Gilgit, now in Pakistan-occupied Kashmir, by shepherds back in 1931. They were discovered in a wooden box in a circular chamber inside a Buddhist stupa. A corpus of many Buddhist texts, such as the 4 sutras from the Buddhist canon, was found. The manuscripts survived because they were written on birch bark, which remained preserved due to the freezing sub-zero temperatures of the region. They were written in Sanskrit, in a script that constitutes the precursor to the Sharada script. Similar manuscripts in the same Buddhist stupa were unearthed by the Indian scholar Madhusudan Kaul Shastri in 1938 and by the Italian scholar Giuseppe Tucci in 1956. The most famous of the Gilgit manuscripts is a copy of the Sadharma Pundarika Sutra or the Lotus Sutra, a Buddhist text which, for many Indians and East Asian Mahayana Buddhists, constitutes Gautam Buddha's last sermon, in which he declared that all humans, irrespective of gender or past deeds, and even animals can attain enlightenment if they follow the right path, cultivating virtues such as patience, gentleness, a calm mind, wisdom, and compassion. Another important dimension of this sutra is Gautam Buddha highlighting the importance of different ways to explain the same idea to different people, citing the example of how it's not immoral if a father lures his son with the promise of toy carts to make the child escape a burning house, and then make him travel on a real cart instead to flee the fire spot. Scholars agreed that the local Buddhist devotees compiled these texts between the 3rd and the 7th century CE. Some of the Gilgit manuscripts even deal with medicine and culinary skills. Excavations near the Avanti Swami temple in Avantipur in Pulwama district of Kashmir have resulted in the discovery of a manuscript dating to the 9th century CE, mentioning the then Utpal king Avanti Varman. सिक्कों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उपलवंशी राजा जो हैं उनके समय के सिक्के हैं और वो जो 8वीं 9वीं शताब्दी से ही आरंभ होते हैं. A Buddhist bronze statue dating to 989 CE, currently in the Pratap Singh Museum in Srinagar, appreciated by art connoisseurs, also carries 3 lines in the Sharada script, attesting to the rule of Queen Dida of Kashmir, a powerful ruler by all accounts. थापर में पाया गया एक शिलालेख है. उसके बाद इसके अतिरिक्त 10वीं 11वीं शताब्दी की कश्मीर की बड़ी प्रसिद्ध रानी हुई हैं, रानी दिद्दा. उसके 10वीं 11वीं शताब्दी समझिए आप, 11वीं शताब्दी में रानी दिद्दा हुई हैं. उनके समय की एक कांस्य मूर्ति है अवलोकितेश्वर की, जिसके आधार पर शारदा में लिखा गया है. रानी दिद्दा के समय का ही एक और शिलालेख भी पाया गया है जो खंडित है, लेकिन वो आजकल लाहौर म्यूज़ियम में, लाहौर संग्रहालय में रखा गया है. उसके बाद भी अनेक शिलालेख पाए गए, जैसे राजा जय सिंह का शिलालेख है जो श्रीनगर के म्यूज़ियम में है. उसके अतिरिक्त राजा जस्सक का 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी का शिलालेख है. राजा जस्सक का जो शिलालेख है इसके बारे में विशेषता ये है कि इसमें आरंभ तो इसमें शारदा से हुआ है, लेकिन बीच में उसके बाद नागरी लिपि में भी लिखा गया है, जिससे ये पता चलता है कि नागरी लिपि का पहले कश्मीर में प्रयोग 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ है. शारदा लिपि की जो संरचना है
वो देवनागरी से बहुत मिलती जुलती है। शारदा लिपि को आप बिल्कुल देवनागरी की सिबलिंग कह सकते हैं, यानी देवनागरी की वो सहोदरा लिपि है। लेकिन देवनागरी लिपि के बारे में लगता है कि देवनागरी लिपि बाद में आई है और शारदा लिपि पहले आई है। थोड़ा सा परिवर्तन करके शारदा लिपि के अनेक अक्षरों को देवनागरी लिपि बन जाते हैं। शारदा लिपि की ये विशेषता भी, जिसे होमोग्लिफ्स कहते हैं, होमोग्लिफ्स यानी समान दिखने वाले अक्षर। शारदा लिपि के अनेक अक्षर जो हैं वो समान दिखते हैं। From the 9th century CE onwards, the Sharada script made its presence felt across the western Himalayas, not only in Kashmir, but also in Afghanistan, Himachal Pradesh and Ladakh. And coins, manuscripts and inscriptions bearing the Sharada script have been discovered outside Kashmir as well. A temple dedicated to Lord Shiva in Baijnath in Himachal Pradesh, dating to 1204 CE, carries inscriptions in the Sharada script. An excerpt from the same, referring to the nearby river, in translation reads, "Where that river called Binduka, leaping from the lap of the mountain with sparkling wide waves, resembles a bright maiden in the first bloom of youth playing with a ball." उत्तर पश्चिमी हिमालय के एक बहुत बड़े भूखंड में इसका प्रयोग विचारों के संप्रेषण के लिए और ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए होता रहा है। केवल कश्मीर में ही नहीं, कश्मीर में इसका जन्म अवश्य हुआ, लेकिन कश्मीर के अतिरिक्त लद्दाख, चिल्लास, गिलगित, वहाँ से लेकर काबुल तक, दिल्ली में भी इसका प्रयोग होता रहा है। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में विशेषकर 2 विशेष केंद्र रहे हैं शारदा लिपि के, जो एक तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी विशेषकर चंबा और कांगड़ा, चंबा विशेषकर, चंबा में जो शारदा लिपि के ताम्रलेख, शिलालेख आदि मिले हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। कश्मीर में उतने शायद शिलालेख और ताम्रलेख तो कश्मीर में कोई मिला ही नहीं, लेकिन शिलालेख जो मिले हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन फैलाव जो इसका है शारदा लिपि का, वो स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़े भूखंड में हो रहा है। यहाँ तक कि तुर्फान में, मध्य एशिया में जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं, उनका अध्ययन करते हुए लॉर्ड सैंडर नाम के एक विद्वान ने ये पाया है कि उसकी लिपि भी शारदा का पूर्व रूप ही है। अनेक अक्षरों की उसने पहचान शारदा अक्षरों से उसमें की है। हिमाचल प्रदेश के शिलालेखों की एक विशेषता ये भी है कि वहाँ पनघट शिलालेख मिले हैं, यानी पनघट जहाँ नहाने जाते हैं, इसको फाउंटेन इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, शिला वहाँ पर भी शारदा में लिखे मिलते हैं। Over the centuries, the Sharada script has undergone modifications, but not so heavy as from Ashokan Brahmi to Gupta Brahmi. शारदा लिपि के विकास को, किस प्रकार से शारदा लिपि के आरंभिक अक्षर थे, इसको देखने के लिए अगर इसका हम अध्ययन करना चाहें तो केवल हमें शिलालेखों और उत्कीर्ण लेखों और ताम्रपत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और वास्तव में अगर हमने शारदा लिपि का विकास देखना है तो शिलालेखों से या पनघट लेखों से या ताम्रपत्रों से कहीं अधिक हमको पांडुलिपियों का अध्ययन करना पड़ेगा। शारदा लिपि की विशेषता ये भी रही है कि जहाँ इसका विकास हुआ, इसके विकास के 3 चरण बताते हैं।
For long it was thought that the Sharada script dates to the 9th century CE. However, a recent study dates it to earlier. A manuscript discovered in Bakshali near Peshawar in Pakistan in the Sharada script on the subject of mathematics has been carbon dated in 2017 by scientists at the University of Oxford and found to be dated to the 3rd or 4th century CE, which pushes back the date we thought of for the origin of the Sharada script. Interestingly, this is the first manuscript referring to the number 0 in it, represented in the form of a numeral. It was the Indic civilization that gave to humanity the positional or decimal scheme of numeration that places digits next to each other based on place value. And this advanced system of numeration later traveled to the Middle East and Europe, largely replacing the existing Roman system of numeration. Indeed, the numerals developed in India were much better suited for mathematical operations ranging from addition to square roots. In the 14th century CE, Muslim rulers took control of the Kashmir Valley, and the Perso-Arabic script came to be used in the royal court. Kashmiri Hindus continued to be eminent scholars, courtiers and administrators and kept the Sharada script alive, which is still used for birth records and horoscopes, etc. Many Kashmiri Muslims too use the Sharada script along with the Perso-Arabic script even to mark graves, and the 16th century Sufi master Hamza Makhdoom has used both the scripts for his will. मुसलमानों के शासन की स्थापना के बाद भी बहुत समय तक शारदा और अरबी दोनों लिपियों का प्रयोग होता रहा है। जैसे कि राजा जो कश्मीर का सुल्तान हुआ है ज़ैनुल आबदीन, उसके समय में खनमूह में एक बावली है, खनमूह की उस बावली में जो जिसे जहाँ भुवनेश्वरी मंदिर है वहाँ पर शारदा का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त उसके बाद भी 15वीं-16वीं शताब्दी में एक बाथरूम में, एक गुसलखाने में एक शिलालेख, गुसलखाने के प्रवेश द्वार पर वो शिलालेख लगाया गया है, वो वहाँ भी इसका शारदा का प्रयोग हुआ है। यानी यही नहीं, जो कश्मीर के एक बहुत बड़े संत हुए हैं मखदूम साहब का जो वसीयतनामा है वो दोनों लिपियों में है, शारदा लिपि में भी और अरबी और फारसी लिपि में भी, दोनों लिपियों में है। इस प्रकार मुसलमानों के शासनकाल में भी शारदा लिपि का प्रयोग हुआ है। 1484 ईस्वी में उसके बाद भी कई कब्रें मिली हैं जिनमें शारदा अरबी लिपि के साथ साथ शारदा में भी लेख लिखा गया है। और जो अंतिम शिलालेख कश्मीर में पाया गया है वो 1799 में दिगोम नाम के स्थान पर, जो कपाल मोचन तीर्थ है कश्मीर में, शुपियान के पास, कश्मीरी की जो आरंभिक जितने भी कश्मीरी में ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब शारदा लिपि में ही लिखे गए हैं। चाहे वो 11वीं शताब्दी का छुम्ब संप्रदाय हो, चाहे वो 11वीं शताब्दी का महानय प्रकाश हो, चाहे वो 15वीं शताब्दी का बानासुर कथा हो जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के समय में वो लिखा गया है, बानासुर कथा नाम का काव्य ग्रंथ। तो उसके बाद भी सुख-दुख चरित है जो कि हसन शाह के समय में 15वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया है, वो भी शारदा लिपि में लिखा गया है। यानी शारदा लिपि का प्रयोग केवल संस्कृत लेखन के लिए कश्मीर में नहीं हुआ है या अन्यत्र नहीं हुआ है, बल्कि शारदा लिपि का प्रयोग जो है वो कश्मीरी लिखने के लिए भी हुआ। जो शाही वंश के राजा हुए हैं काबुल के, उन्होंने भी अपने सिक्कों में शारदा लिपि का प्रयोग किया है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। The Sharada script is significant not only for the texts written in it, but also for its religious and cultural significance among Kashmiris even today. The Sharada script is the closest to the Brahmi script and has changed very little for the last 1500 years. It served as a precursor to other scripts like the Takri script, which became popular in Himachal Pradesh, and the Gurmukhi script that emerged in the Punjab, in which the Adi Granth, the holy book of the Sikhs, has been written and which has now been standardized in India as the script for the Punjabi language. In its expansion and further development, we find that in the 13th century, the Sharada alphabets were replaced by Devashish, which gave rise to Takari script. And we find a large number of Takri epigraphs and manuscripts written in Takari, which was prevalent in Himachal Pradesh. There are many inscriptions and
other documents available in Burimal Museum in Chamba. It is said that Gurumukhi was also developed through Sharada script at a later period. One point needs special mention here, that is regarding the development of Tibetan script. It is said that Tibetan script has also developed from Sharada. In this regard, we have a very important reference available in Tibetan sources. It is said that a king of Tibet during 11th century sent a scholar from Tibet whose name was Thomi Sambhota. He was specially sent to Kashmir for developing a script for spoken Tibetan. And there is a very important grammar available in Tibetan which is written by Thomi Sambhota. So this is a very important evidence for development of Tibetan through Sharada. शारदा का पठन पाठन जैसे लुप्त हो गया था, तो बहुत जगह कार्यशालाएं करके लोगों को हमने तैयार किया है और उसके साथ साथ अब हम उनको शोध करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट खोज करके उनको दे रहे हैं। तो अभी वर्तमान में हमने एक सामुद्रिक शास्त्र पर एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, तो उसमें अपने शरीर के सभी अंगों के ऊपर लक्षण, उनके क्या फल हैं, क्या रूप हैं, वो सब चीज़ें उसमें दी हैं। तो उसको हमने एक छात्र को दिया है शोध करने के लिए। ऐसे ही एक कल्प वृक्ष है जो एक प्रकार से दर्शन शास्त्र का ही ग्रंथ है, शारदा में ही है, उस पर भी कार्य करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और अभी हम खोज रहे हैं बहुत सी शारदा में मैन्युस्क्रिप्ट तो बहुत सी हैं जो तंत्र की भी हैं और शैवागम, कश्मीर शैवागम अपने में एक विशेष ही दर्शन है जो दुर्लभ भी है, उसके विद्वान भी बहुत कम हैं। तो उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कुछ पांडुलिपियां लेकर के शारदा की, उन पर काम किया जाए, क्योंकि अधिकतर कश्मीर के विद्वानों ने शारदा में बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। आयुर्वेद पर भी बहुत ग्रंथ हैं इसी तरह के। अभी एक वैद्य निघंटु वगैरह इस तरह के ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है, तो एक बालक को मैंने भेजा था वहाँ शारदा से देवनागरी करने के लिए, तो वैद्य निघंटु वगैरह कई इस तरह के ग्रंथों पर कार्य चल रहा है। The Sharada script has been on a decline. Therefore, efforts are being made at various levels to preserve it from getting extinct. बहुत सारे हमारे ग्रंथ ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हमारे देश के लोगों के द्वारा नहीं पढ़े गए क्योंकि उन लोगों ने लिपियों का सही ज्ञान नहीं लिया। तो लिपि के बारे में सामान्य समझ विकसित करना ये एक बहुत बड़ा और बहुत क्रांतिकारी कदम होगा, जिससे हम भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का, भारतीय शास्त्रों का, हमारे दर्शन का, सबका अध्ययन कर सकते हैं। लिपि लिपि भारतीय लिपि, लिपि लिपि भारतीय लिपि, लिपि लिपि भारतीय लिपि, ये तो बता दो कहाँ से निकली लिपि लिपि भारतीय लिपि। हमसे रूबरू तो हो लो, इतिहास के पन्ने खोलो, संस्कृति दर्शाने वाली, ज्ञान हम तक पहुँचाने वाली लिपि लिपि भारतीय लिपि, ये तो बता दो कहाँ से निकली लिपि लिपि भारतीय लिपि। तुम हमारी शान हो, हिंद की पहचान हो,